Hello everyone. So let us start discussing the questions from your test 4 of the test series. So let's have the very first question. This topic chemical bonding is a very vast topic, but if you do it correctly बच्चों बहुत scoring topic भी है because inorganic questions को करने में ज्यादा समय नहीं लगता है अगर आपको आते हो, right? तो चलो start करते हैं question. Among the following molecule expected to be stabilized by anion formation. तो इनमें से कौन सा molecule है जब उसमें एक extra electron add होगा अनायन बनेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा. दिस इज द क्वेश्चन फॉर अस. सो लेट अस चेक वन बाय वन. C2. I hope you all know the order of electron filling as per MOT. C2 total electron 12, atomic number of carbon is 6. C2 means total 12 electrons we are supposed to fill. So sigma 1 is 2, sigma star 1 is 2, sigma 2 s2, sigma star 2 s2, pi 2px equal to pi 2py and sigma 2pz, right? So we are supposed to fill 12 electrons. So we have already filled how many electrons? 8 electrons. Now one here, and then 2 and 2, right? So this is the configuration of C2. Bond order is 2 in C2. Double bond is there. Now if I make it C2 negative, so now electron will be added to this, which is a bonding molecular orbital. So if you add electron to bonding molecular orbital, bond order increases, right? And the stability of the species increases. So initially in C2 the bond order was 2. अब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया बच्चों 2.5 और वो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, जिसकी वजह से हमारा जो पहला ही ऑप्शन है C2 बिकॉज दैट extra one electron is added to bonding molecular orbital resulting into the more bond order, तो वो हमारा आंसर मिल जाएगा. तो हमें आगे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं बिकॉज C2 इज द करेक्ट आंसर. एंड इवन इफ यू वांट टू डू अगले तो आप चेक कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन ऐड होने से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा है या कम हुआ है. अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ती है तो मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, स्पीशीज स्टेबल होती है, राइट? So I hope you all know bond order का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए. हाफ द नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस number of anti-bonding electrons. Okay, let us have this question. The correct shape and hybridization is represented by. So आपको देखना है कि किस ऑप्शन में शेप और हाइब्रिडाइजेशन दोनों करेक्ट है. BCl3 तुम्हें पता होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ट्रायगोनल प्लेनर. तो BCl3 में शेप तो सही है बट हाइब्रिडाइजेशन गलत लिखी है. Let's move on to the next. H2O, दो लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर, बेंट शेप, V शेप जिसे हम कहते हैं, and the hybridization is sp3. Again, hybridization part is wrong. Third, NF3, one lone pair, three bond pair, trigonal, pyramidal, just like ammonia, and the hybridization is indeed sp3. So this is the correct answer where both shape and hybridization is correctly given in C option. One lone pair and three bond pair, sp3 hybridized it is. Now ASF5, of course, trigonal bipyramidal it is, but the hybridization is sp3d2 ना कि d2 sp3. d कौन सा है? वैलेंस शेल का d यूज हुआ है, sp3d2 hybridization है. So we'll mark our answer as C, जहां दोनों hybridization and shape of the molecule is correctly given, guys. Now the question is which of the following pair of species have identical shape? एक जैसी shape है. तो let us quickly check, guys. CO2 and HCF2 लीनियर, दोनों ही लीनियर है. अरे बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल होते हैं ऐसे कि पहला ऑप्शन ही करेक्ट मिल जाए. अगर CO2, आई होप सबको CO2 की शेप पता है, लीनियर. एंड XEF2, इट हैज xenon नोबल गैस है तो उसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. आउट ऑफ 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो 3 लोन पेयर हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स पर बॉन्ड बना रहा है. सो दिस इज द शेप. द मॉलिक्यूल विल लुक लाइक लीनियर. तो हमारा CO2 और XCF2 दोनों ही लीनियर हैं. XCF2 में वी हैव 3 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर. तो शेप दोनों की जो आ गई है वो आ गई है लीनियर. तो यहाँ हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही मार्क हो जाएगा बच्चों. इजी पीजी, राइट? चलो बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं. CLF3, तो क्लोरीन का टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, आउट ऑफ 7 3 ने बॉन्ड बनाए हैं और 2 लोन पेयर हैं. दैट मींस दिस इज T शेप. BF3 इज ट्रायगोनल प्लेनर, तो शेप सेम नहीं है. O3 आपको तो ओजोन का स्ट्रक्चर बेंड शेप है. I3 नेगेटिव लीनियर है जस्ट लाइक XCF2.
सल्फेट आयन टेट्राहेड्रल है, और XeF4 तो ये होगा हमारा स्केयर प्लेनर। तो बाकी किसी ऑप्शन में सेम आइडेंटिकल शेप नहीं है, तो हमारा आंसर तो हमें पहले ही मिल गया था, दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज CO2 एंड XeF2। Now the question is, which of the following is paramagnetic? Paramagnetic species are those which have unpaired electron, right? So unpaired electron किनके पास है? Let's quickly check it out. I hope you all know the shortcut to solve it. MOT में अगर total number of electrons molecule में odd number है तो molecule होगा paramagnetic, और अगर वो total number of electrons in the species is even number तो it will be diamagnetic. But exception क्या है? The exception is 10 and 16. 10 total electron या अगर 16 total electrons है, दोनों ही 10 और 16 even number है, but क्योंकि exception है तो the species with 10 total electrons or 16 total electrons they will be paramagnetic. तो चलो check करते हैं. NO positive, how many electrons? 15. So it will be NO positive 14 electrons, sorry, 14 electrons NO positive, it will be diamagnetic, right? So it will be diamagnetic. CO कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8, अगेन 14 इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक. O2 2 नेगेटिव, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन हुए हमारे पास? O2 में हुए 16, 2 नेगेटिव तो 18, अगेन 18 टोटल इलेक्ट्रॉन्स इवन नंबर डायमैग्नेटिक. B2 टोटल इलेक्ट्रॉन 10, अभी मैंने बताया एक्सेप्शन, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 या 16 है तो मॉलिक्यूल होगा पैरामैग्नेटिक. तो बस इसी शॉर्टकट को जल्दी से यूज करते हुए, समय बचाते हुए हमें मिल गया अपना आंसर कि B2 मॉलिक्यूल जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन है वो होगा पैरामैग्नेटिक, राइट, एज पर MOT. सो द आंसर इज ऑफ कोर्स D होंगे गाइस. Now the question is the bond length of species O2, O2 positive and O2 negative. Bond length, तो पहले हम bond order लिखते हैं इनमें कि bond order क्या होगा. What will be the bond order? Bond order is the number of bond between the two. So O2 का bond order होता है 2. I hope you all know O2 has bond order 2. O2 positive 15 इलेक्ट्रॉन तो bond order होगा 2.5. O2 negative 17 electrons, so bond order will be 1.5. तो bond order जितना ज्यादा bond length उतनी कम, atoms के बीच में ज्यादा bond है तो they will be close together. तो सबसे कम bond length आएगी O2 positive की, और सबसे ज्यादा जो bond length होगी वो होगी O2 negative की. So bond order is inversely proportional to bond length. So this should be the order guys. So we'll go with D. Bond order is inversely proportional to bond length, और हमसे पूछा गया था bond length का order, right? तो जिसकी bond length सबसे ज्यादा है वो वही होगा जिसका bond order सबसे कम है. So D donkey again is the answer. This is the answer. D is the correct answer guys. Now the question is, in which of the following processes the bond order has increased and paramagnetic character has changed to diamagnetic? तो आपको ये चेक करना है कि किसमें bond order बढ़ गया है और किसमें जो स्पीशीज है वो पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक हो गई है. तो हम वही शॉर्टकट अपने यूज करेंगे. NO, total number of electron in NO is how many electrons? 15 electrons we have here, right? 15 electrons, और NO जब पॉजिटिव बना तो 14 हो गया, राइट. तो पहले जो बॉन्ड ऑर्डर था NO का दैट इज 2.5. 15 टोटल इलेक्ट्रॉन्स, तो बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5, और टोटल इलेक्ट्रॉन 14, तो बॉन्ड ऑर्डर इज 3. तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 से 3 हो गया, तो मतलब बढ़ गया है. अब बात करते हैं मैग्नेटिक. तो टोटल इलेक्ट्रॉन 15 इज एन ऑड नंबर. ऑड नंबर अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्पीशीज में तो जो बॉन्ड जो हमारी स्पीशीज का बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है. तो पहले ये पैरामैग्नेटिक था, और NO पॉजिटिव में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हो गया हमारा डायमैग्नेटिक, राइट. तो द शॉर्टकट इज, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्पीशीज इज ऑड नंबर इट विल बी पैरामैग्नेटिक. इफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द स्पीशीज इज इवन नंबर दैट इज डायमैग्नेटिक, एक्सेप्ट टोटल इलेक्ट्रॉन्स 10 और 16. 10 और 16 दोनों ही इवन नंबर हैं, बट द स्पीशीज विल बी ऑफ कोर्स डायमैग्नेटिक की जगह पैरामैग्नेटिक, क्योंकि हम एक्सेप्शनल केस की बात करें. तो 10 और 16 टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब उस केस के अंदर ये होगा पैरामैग्नेटिक, राइट. तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बॉन्ड ऑर्डर में इंक्रीज हुआ है और पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक हो गया है. सो विल मार्क आवर आंसर as A. We can check rest of the cases like
14 टोटल इलेक्ट्रॉन्स थे, 14 से 13 हो गए हैं. तो क्या ऑर्डर रहेगा, मतलब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज की डिक्रीज 3 से 2.5 हो गया तो डिक्रीज होगा. सिमिलरली वी कैन चेक O2 बॉन्ड ऑर्डर इज 2, राइट, एंड ऑफ कोर्स O2 पॉजिटिव होगा, 2.5 हो गया है. बट क्या मैग्नेटिक बिहेवियर में भी चेंज आया है? ये पैरामैग्नेटिक था, राइट, और ये भी पैरामैग्नेटिक है. सो वी कैन चेक दिस वे. सो द आंसर इज इंडीड A option. You can check in all other. So you are supposed to check कि बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़े और साथ में जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है वो भी कन्वर्ट होना चाहिए डायमैग्नेटिक बिहेवियर में. वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है. दैट इज द ओनली फर्स्ट ऑप्शन, गाइस. Okay, now the question we have is which of the following statement is not correct from the point of view of MOT? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से? चलो चेक करें. Be2 is not stable molecule. तो Be2 बेरिलियम, बेरिलियम की अगर मैं बात करूं, बेरिलियम एटॉमिक नंबर इज 4 एंड Be2 मॉलिक्यूल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर 0 है. तो अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 4 एंटी बॉन्डिंग, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज 0 दैट मॉलिक्यूल कैन नॉट एग्जिस्ट. सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. इट इज नॉट अ स्टेबल मॉलिक्यूल, डज नॉट एग्जिस्ट. अगेन सिमिलरली He2 क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इज 0 is not stable, but He positive is expected to exist because bond order 0 नहीं है. इसमें तो bond order 0 आ रहा है. Bond order is number of half the number of bonding electron minus anti bonding. Now the next question is bond strength of N2 is maximum. N2 में है ट्रिपल बॉन्ड और मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड, तो मैक्सिमम डायटोमिक स्पीशीज 3 बॉन्ड बन सकते हैं. तो यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, तो ज्यादा है. दिस इज ऑल्सो ट्रू. द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन F2, तो F2 में 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, राइट, 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है. इसमें मिक्सिंग नहीं होगी तो ऑर्डर क्या होगा? यस, ऑर्डर क्या होगा? सिग्मा 2pz की एनर्जी कम होगी पाई 2px और पाई 2py से, because fluorine F2 has total 18 electrons, so no sp mixing, so we have this order of energy. I hope you know, guys, you should know the energy filling order. So incorrect statement that we are supposed to figure out is D donkey, क्योंकि यहां पर एनर्जी ऑर्डर सही नहीं दिया गया है. So D donkey is the correct, right? So you can check. Okay, let's see the next one. Which of the following match is incorrect? You are supposed to figure out the incorrect match. आपको shapes दी गई हैं XeOF2. What is the shape of XeOF2? Whether it is a T shape, तो xenon है. So let me quickly make out the shapes of all these molecules. Xenon is a noble gas, ठीक है. 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नोबल गैस है तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे. एंड ऑक्सीजन जो xenon के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, सेंट्रल एटम सब में xenon है. Oxygen will form double bond with xenon and fluorine will form single bond, right guys? Yes. Okay guys, now we have total 8 valence electrons in xenon. Out of 8, 4 are making the bonds. So that means how many lone pair? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So this is the shape, that is T shape. This is T shape, the first molecule, right? This is the T shape. Okay, let's make the another molecule XeO2, XeO2F2, right? So let me make XeO2F2. So total electrons that we have in xenon is 8 electrons. So out of 8 electrons, we have fluorine and 6 electrons are making bond, right? Like this. So this shape of the molecule is not square planar, rather 1 lone pair and 4 bond pair. So it is seesaw. This shape is seesaw. This is wrong, guys. This is seesaw shape. This is a seesaw shape. Let us quickly check the others also. XeO3, xenon with 1 lone pair and double bond with each oxygen. Again, it is a pyramidal. XeF6, of course, distorted octahedral, 1 lone pair and 6 bond pair. So the incorrect is this
XeO2F2, which is seesaw, not square planar. So it is a seesaw molecule as per VSEPR. So very important topic बच्चों, VSEPR वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी, मोस्ट फंडामेंटल टॉपिक क्वेश्चन आएगा, और अगर आपको VSEPR आती है तो आपको मार्क्स भी बढ़िया से जल्दी से मिल जाएंगे. Okay, the ion that has sp3d2 hybridization for the central atom is, so what is the formula to calculate the hybridization? There is a shortcut formula to calculate hybridization. तो आपको निकालना होता है n की वैल्यू, this is the half the number of valence electrons on central atom, valence electrons on central atom plus number of monovalent side atom जिनकी वैलेंसी 1 है, +1 और -1 मीन्स ग्रुप 1 और ग्रुप 17 के एटम्स, माइनस के टाइनिक चार्ज, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसको माइनस करना है, एंड देन वी हैव प्लस अनायनिक चार्ज, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है स्पीशीज पर तो उसको उतना ऐड करना है. तो अगर n की वैल्यू आएगी 2 तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इफ n वैल्यू कम्स आउट टू बी 3 तो sp2, 4 तो sp3, 5 तो sp3d, if n value comes out to be 6 it is sp3d2, and if it is 7 then it will be sp3d3, right? So let us check quickly. Let's see the first case. Half iodine is the central atom, in all the option iodine is the central atom, 7 valence electron. Chlorine side atom, in all the chlorine, fluorine, bromine, they all are monovalent. So in first case 4 monovalent side atoms, now there is a negative charge, -1, I need to add that one. So it will be 12 by 2, that is 6. If it is 6, the hybridization is sp3d2. And they are asking us about this only, so the answer I will mark is A. Using the same formula, guys, you can check with each case. In each of them, central atom is iodine, side atom is monovalent, and each will have an ionic charge. Simply, you can check which has sp3d2 hybridization for the central atom. This is the formula. I hope you know. If you don't know, make sure कि अब आपको पता हो. So sp3d2. Yes. Okay, let me check one more here. Bromine, Br(F2), bromine. Central atom is bromine, right? How many electrons it has? Bromine has how many electrons it has? 7. Noble gas. Side atom 2 plus 1. So it comes out to be 5, guys. Yes. 7 and 2. That is, 2 is the side atoms, monovalent, negative charge. So this will be sp3d. So this is sp3d. This will also be sp3d. So guys, we just have A as the answer, as I explained. So this is sp3d here. Just only this is the correct answer. You will mark, right? Now the question is the number of anti-bonding, that is pi star pair of electrons in O2 2 negative. So O2 2 negative, total number of electron is 18. You should know how to fill the electrons as per MOT, right? The order of electron filling, because the total electron is more than 14. 18 electrons we have. Let us have a look. So it is sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, sigma 2pz2, pi 2px2, pi 2py2, pi star 2px2, and pi star 2py2. Total 18 electrons, and they are asking the number of electron in pi star orbitals. Yes, pi star. The number of anti-bonding pi star pair of electrons. How many pair of electrons? Be very careful, guys. 2 pair of electrons, right? We have 2 pair of electrons here. This is 1 pair of electron in pi star. This is another pair. So answer will be 2. 2 pair of electrons. Be very careful. They are not asking number of electrons. They are asking the pair of electrons, the number of pair of electrons. So this is the configuration. So if you know how to write the electronic configuration of molecules, this is a cakewalk for you. बस यहाँ पर एक गलती होने की probability है कि आप number of electrons fill कर दें rather than pair of electrons. उससे बचें. Be mindful. Okay. Now based on VSEPR, calculate the number of perfect 90-degree angles in BrF5. So bromine is the central atom, and bromine has
being a halogen it has 7 valence electron. तो ब्रोमीन के पास है हमारे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड आउट ऑफ 7 5 इलेक्ट्रॉन्स को यूज किया है टू फॉर्म द बॉन्ड. So 5 bond pair, 1 lone pair, octahedral geometry, square pyramidal shape. Now because there is a lone pair, there is a lone pair bond pair repulsion, जिसकी वजह से इनको लगेगा धक्का from the lone pair and the angles will not remain 90 degree ideally, right? Because they will feel lone pair bond pair repulsion will be there. So this lone pair will repel these bond pairs and they will become like this. So the answer is no exact 90 degrees. So 0 exact 90 degree because of the distortion in the geometry because of the presence of lone pair that repel the bond pairs, resulting into not a regular geometry. Right, guys? So be very careful again here. Okay, now the question is number of molecules in which lone pair or odd electron of central atom present in the directional bond. Directional bond means जहाँ hybridization हुई है, hybrid है, covalent है, right? So directional, which gives a particular direction, hybridization हुई. Let us check. Okay, NH3, ammonia, sp3 hybridization. This is one lone pair which is present in sp3 hybrid orbital. So it is present in sp3 hybrid orbital. So this is present in directional. If it is present in a hybrid orbital, lone pair or odd electron, that means वो directional है, right? PH3 आपको अगर याद हो ड्रैगोज रूल, फेलियर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बॉन्ड फॉर्मेशन से कॉम्पनसेट नहीं हो पाती है, दैट इज नोन एज ड्रैगोज रूल. और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है तो वो जो लोन पेयर है पड़ा हुआ है दैट इज नॉट इन द हाइब्रिडाइज्ड, ऑलमोस्ट 90 डिग्री एंगल रहते हैं, दैट इज नॉट इन द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, दिस इज इन प्रेजेंट इन s ऑर्बिटल, प्योर s ऑर्बिटल. तो यहां पर जो लोन पेयर है वो डायरेक्शनल ऑर्बिटल में नहीं है, प्योर s में है. Now NO2, of course it is a odd electron species guys, right? NO2, नाइट्रोजन के पास है 5 electrons. Yes, is it correct? Nitrogen cannot have, be careful, nitrogen cannot have more than, of course, 8 valence electrons. So be very mindful of it. So again, this odd electron is present in hybrid orbital here. So this is also present in hybrid orbital. ClO3 again a odd electron species because chlorine के पास 7 valence electron है, 6 ने oxygen के साथ bond बनाया है, double bond with each oxygen, 1 lone pair, again in hybrid orbital. H2O, you know, bend shape, 2 lone pair, 2 bond pair, both the lone pairs are present in sp3 hybridized orbital. CF3 CH3, बेटा ये तो आ गया हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फ्री रेडिकल. यस, तो आई होप आपको याद होगा CH3 का जो फ्री रेडिकल है ऑड इलेक्ट्रॉन है वो प्योर P में रहता है और इसका sp3 में. तो आई होप आप लोगों को याद होगा ये जो दो केसेस हैं लास्ट के, दैट इज फ्रॉम ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल. CH3 और CF3 का केस हम पढ़ते हैं. तो जो CH3 का ऑड इलेक्ट्रॉन है वो P ऑर्बिटल में है. एंड ऑफ कोर्स हमारा एक और आया था PH3 जिसका भी नॉन डायरेक्शनल प्योर s ऑर्बिटल में है. गॉट इट गाइस? यस, डन. सो आई होप यू गॉट योर आंसर. इनमें से किस स्पीशीज में जो है डायरेक्शनल में प्रेजेंट है, डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, यू कैन प्लीज सी हियर, राइट गाइस, in which it is present in directional and in which it is not present in directional. So that is the correct answer. You can check here guys. That's all for today. Let me see you in some other session. Yes, thank you so much.